அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் মারা பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় সুপারস্টার থালাপতি বিজয় এখন শুধু সিনেমার জগতেই নয়, রাজনীতির ময়দানেও হয়ে উঠেছেন সবচেয়ে আলোচিত এক নাম। দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তদের মাঝে গুঞ্জন ছিল একদিন না একদিন রাজনীতিতে বড় কিছু করতে চলেছেন থালাপতি বিজয়, আর এবার সেই কথাই যেন বাস্তবে পরিণত হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন থালাপতি বিজয়। তার দল ও সমর্থকদের নিয়ে যেভাবে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা ইতোমধ্যেই সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে জনসভা, সব জায়গাতেই দেখা গেছে মানুষের ঢল। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিজয়কে সমর্থন জানিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে থালাপতি বিজয়ের এই জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে তার দীর্ঘদিনের মানবিক কাজ, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তরুণ সমাজের সাথে গভীর সংযোগ। সিনেমায় তিনি সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আর সেই ইমেজ বাস্তব জীবনেও মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। শুধু তামিলনাড়ুতেই নয়, পুরো ভারত জুড়েই এখন আলোচনা, থালাপতি বিজয় কি দক্ষিণ ভারতের পরবর্তী সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা হতে যাচ্ছেন। অনেকেই মনে করছেন তার জনপ্রিয়তা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে ভারতের রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারেন তিনি। এদিকে থালাপতি বিজয়ের এই দুর্দান্ত সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢালিউডের মেগাস্টার শাকিব খান। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী শাকিব খান থালাপতি বিজয়ের প্রশংসা করে বলেন, আমার বিশ্বাস থালাপতি বিজয় একদিন পুরো ভারত রাজত্ব করবে। তিনি শুধু একজন সুপারস্টার নন, মানুষের হৃদয়ের নেতা। ভবিষ্যতে তিনি পুরো ভারতের মহারাজা হয়ে উঠবেন। শাকিব খানের এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। দুই দেশের ভক্তরাও বিষয়টি নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। অনেকে বলছেন, தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். সো দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক, একটি কমেন্ট আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।